उसमें हमारे विपक्ष ने 18 सूट्स हमारे खिलाफ डाल रखे हैं। उसमें से 2 सूट्स में जो हमने जवाब समय पे फाइल किए थे वो किसी वजह से, नामालूम वजह से रजिस्ट्री ने वो जज साहब की फाइल में नहीं पहुंचाए या किसी प्रकार से वो जज साहब की फाइल में नहीं थे। तो जज साहब ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने हमारे खिलाफ एक एक्स पार्टी चलने का, यानी कि हम लोगों को इन 2 सूट्स में बिना सुनवाई किए आप हमारे खिलाफ चलने का एक हुक्म पास किया था। अब वो, क्योंकि हुक्म जो है बुनियादी तौर पे गलत था, हमने तो टाइम पे फाइल कर दिए थे, तो हमने एक एप्लीकेशन जज साहब के सामने लगाई कि आपका वो ऑर्डर जो रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। और साथ के साथ हमने एक एसएलपी भी यहां सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि वो ऑर्डर जो है गैर कानूनी है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि किसी वजह से रजिस्ट्री की गलती से जज साहब के सामने नहीं आया होगा, रजिस्ट्री ने कुछ गड़बड़ की है या जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी आए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आई कुछ दिन बाद, उससे पहले ही वहां के जो जज साहब थे उन्होंने अपनी रजिस्ट्री की गलती मान के, उस ऑर्डर को गलत मान के, उस ऑर्डर को ही विड्रॉ कर लिया। यानी कि जो हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था वो विड्रॉ हो गया, खत्म हो गया। तो हमने आज आके जज साहब को यहाँ एसएलपी में यही बताया कि हम तो वहीं जीत गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो अब आपको तकलीफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो भी रिलीफ हमने मांगी थी वो हमें वहां से मिल गई। एक और मुद्दा जो पिछली डेट पे आया था कि जो हमने 7/11 की एप्लीकेशन है, हमने ये दरखास्त लगा रखी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लगाई थी कि ये 18 की 18 पिटीशन बगैर ट्रायल के ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि इनमें कोई दम ही नहीं है। उसको हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस किया था। तो पिछली डेट पे जो हमारा विपक्ष है उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजों के सामने अपील किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जगह हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में जाना चाहिए। बट हमने आज जज साहब को ये बताया कि नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो सूट चलाने का यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। तो ये तो एक स्पेशल केस के तौर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा से अपने पास एक केस बुलाया था, तो वहां फर्स्ट अपील की या जो एक सिंगल बेंच की अपील का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इसलिए हमें एसएलपी में आना पड़ा। तो अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मुद्दे को वो अगली डेट पे यानी कि नवंबर में इस मुद्दे पर भी गौर फरमाएंगे। इन मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद case, there are 18 plaints which have been filed by our opposite side, out of which 16 were allowed to be proceeded by the Allahabad High Court. 2 were ordered to be proceeded as ex parte because there was no reply in these 2 plaints before the honorable judge in the High Court because of the mistake of the registry. So that order was passed against us, and that in 2 plaints proceedings will be ex parte, that is behind our backs, without listening to us. Those matters will be decided. But we moved an application showing to the honorable judge in the Allahabad High Court, no, we had already filed these petitions, this is the proof, and there is some mistake or deliberate or otherwise not deliberate, due to which these 2 replies were not placed before the honorable judge. So simultaneously we also moved an application SLP before the honorable Supreme Court to get that order of the honorable High Court set aside, and it took some time to matter to reach here. But meanwhile, realizing the mistake, the honorable judge in the Allahabad High Court withdrew the order, and we won that application in the Allahabad High Court. So there was no need to pursue that matter because we had already won that case in the Allahabad High Court. So we withdrew our application today from the Supreme Court. Second issue which was raised on the last date by the opposite side was that since our application asking for dismissal of all 18 cases without even a trial, because it is absolutely baseless, was also dismissed by the single bench of Allahabad High Court. So the other side had said that there is no need to come to the Supreme Court, as a single bench order of the Allahabad High Court can also be challenged before a division bench of the Allahabad High Court. We today pointed out to the honorable judge, because it was informally asked of us, that there is no original jurisdiction, meaning
that there is no provision for a trial in the Allahabad High Court. There is no jurisdiction at all. Therefore, there will be no appeal against that order. So we'll have to perforce come to the Supreme Court. The Supreme Court said, okay, we will not apply our mind on this today. We will hear this on the next date of hearing, that is in November. Z News.